Yeah, now is it audible, everybody? Now can you hear me? I guess now my voice is audible, right? Okay, great. Thanks, Vivek, for the confirmation. So now you see, just go to this website, GitHub. Okay, then you go to this link, Get for Windows. Okay, mm, it's now not working, but I already shared that link to you. Not this one. Windows 16, Windows 11 for Windows 11. This is VMware Workstation, authorized access. Okay, so I have already shared the link to you in the group. Okay, just go through that and download the VMware Workstation Pro. Okay, so then you can also visit this link and download for Windows. Click on this link. No, no, this is not the link. Okay, anyway, is this the link? Object not found. Okay, anyway, so just try for that link which you have given in the in your group. Okay, so there you try to download. If you face any issue, then just tell me. Okay, so after downloading VMware, just go to this Kali Linux download. Go to this platform. The first link which you are getting here, get Kali. Click on this link. Go for this one, virtual machines. Click on this. Okay, there you have this VMware. Then there is a download option. Okay, and here you can download the software. Okay, click download, and then you have to install that one. Okay, so installation process I have already informed you. So if you face any issue, then just tell me. Okay, now you see I have already installed this Kali Linux platform, as you can see here. Okay, so here is the power on button. Okay, click on this button. Okay, then click on this first one, Kali GNU. Okay, Priyavrata is telling me that my voice is not audible. Okay, uh, now is it audible? Everybody, please mention. My voice is clear. Okay, great. Okay, thanks for confirmation, Sneha and Om. So let's start our session. Okay, now you can see there is a ID and password option here. So as you are downloading this, downloading this for the first time, it will ask for the user ID and password. Okay, so for the user ID, you type KALI Kali, and the password is also same Kali. Okay, then click enter. Okay, so now as you can see, you can open the system here. Okay, my screen now opened. So it is a full screen option. Now I made the full screen for this. Okay, so here
I can do all the stops. Okay, so now I can see this is my background image of Kali Linux. Okay, so now you can do one thing, you can open the terminal over here. Okay, so just do right click. Okay, then go to this terminal option, enter. Okay, so my terminal is open now. Okay, you can see. So here let me tell you something. uh, so users, what is user? Okay, I want to create one user. Now you can see how to create one user. The command is user add. Okay, user add space the username which you want to give. Okay, so here user means what? Guest user. So let me tell you, users in Kali or any Linux operating system, let's say Ubuntu or your Red Hat. Okay, so the commands are similar, or you can say same. So you have to type a command. What is the command? User add space. For space symbol, I'm giving this 5 option. Okay, don't be confused. This is the command. So just you have to type this user add. This is the space option. For space, I'm typing what? This one 5. So for space, I'm just giving this. This is only for the writing part. For writing, I'm using what? 5. User add space the username. Let's say my name is Ashu and I want to create a username on my nickname. So user add space Ashu. Let's okay. So next, after that, I have to type the password which I want to put for the, or which I want to set for this name Ashu. Okay, this is a user I have created. Okay, so PASSWD. Okay, PASSWD 5 or space Ashu. Okay, so after I put this command, it will ask me current type current password. Yes, not current password. Type password. Okay, type password, not current. Ignore this. Okay, password. Type the password, then re-enter password. I will show you. Re-enter password. Okay, then you will put the password 2 times. Then the password will be set. Okay, so let me check. See here, I have already typed user add. Then I have given space user add space ASHU, right? Enter. Okay, then it is mentioning that user already. Okay, so before I guess today I created this user. Let's say I'm creating a username randomly from this chat. Let's say Omraj. Okay, so user add space Omraj. Okay, I guess the screen is visible to all of you and my voice is clear. Okay, user add Omraj. Enter. Okay, now it is asking me that permission denied. Okay, so I'm going to this sudo space bash. I'm going to root user. So password for Kali is Kali. My root user password is Kali. Okay. Now you can see this root. Root means what? This is the root user or the super user or the administrator for my operating system. Okay. So now I will type here user add Omraj. Enter.
Okay, now password PSSWD space Omraj, because for Omraj I'm putting the password. Enter. Now it is asking me new password. Yes, that is new password. For new password, everybody just okay, Omraj. So randomly just give a password. Write it in the chat box. I will put your password as this password. Omraj, please mention. Okay, anybody? Sneha or Priyavrata, Vishmita, Vivek, those who are watching, anyone, just mention a, name, particular name. Okay, Raj dot glitch. Very good. So Raj gave me a password. Raj Raj dot glitch. Okay, Raj dot glitch. Okay, now you can see the password updated successfully, right? So so in this way I can create user. Okay, uh, creator, yes, hello, yeah, hello everyone. Okay, great. So yes, you want to say something or you have any doubt? You mentioned. Okay, so in this way I can create a uh, password. Okay, for delete also we have, I guess, user del. Let's say Ashu. Okay, so user are user. Okay, so I can also delete the delete the user. Okay, I can also do whatever I want. Okay, so I'm just showing you some of the basics. Okay, so you can also check the IP address. Okay, for IP address you can type if config. Okay, now you can see this is the uh, result you are checking here. Okay, so you see this one inet 192.168.166.131. Okay, so this is my IP address. Okay, so this is the net mask. This one net mask 255.255.255.0. Okay, this is my broadcast address. You can see broadcast is 192.168.166.255, right? Okay, and you can see this is my IPv6 address. IPv6 FE80931A. Okay, colon 4528 colon 5B91. Okay, colon F58. Okay, so this is my IPv6 address. Okay, and this is my the first one is my first one means this inet 192.1. This is my IPv4 address and this is my IPv6 address. Okay, so there are also other commands. You can type another one. Let's say this one IP space ADDR. If you type this command, this will give you a detailed information about this. Okay, Yash is saying, sir, do you have a full tutorial in Linux for beginners? Yeah,
Yes, we will cover the Linux basics. Okay, but we have to cover many more things. When you have a special course on Linux, then we will cover all those things. Okay, but we are covering right now cyber security. So cyber security now is a vast thing. So under cyber security, we'll study information security, we'll study the basics of cryptography, we'll discuss the basics of networking, we'll also discuss the basics of your Linux or Kali Linux things. Okay, so and few practical sessions I'll be providing. Okay, so yes, I hope you are in the group, in the WhatsApp group. So if you are there, it is good. If you are not there, you can tell me. I will share the link to you. Okay, of the WhatsApp group, you can join there and you can get all the details. Okay, so we'll discuss all these things one by one. Okay, you see, uh, so this is the uh, IP, that means to know all these things, what is IP address, okay, what is the basics of networking, to know all these things, what is INET, what is IP address, what is subnet mask, what is Ethernet, okay, what is router, okay, what is LAN, what is WAN, okay, what are the topology of networking. So all the basics will be covering. Okay, so just to know the requirement of networking, I showed you this practical. Okay, to generate curiosity in your mind, I just show you some of the implementation of this. Okay, there are so many vast things we have. Okay, let me show you some of the things which we are going to discuss in the future. Okay, see, there are so many things. Let's say there's some Kalinak box, that means to find out the box, we'll be discussing it. This is for OPSEC training, we'll be discussing. These are some tools. Okay, reconnaissance, this is used for your penetration testing. Okay, resource development, execution. There are so many things. For forensics also, we have some tools. For autopsy, for everything we have. This is also one NAP to scan a port or to scan a network. Okay, we're having this nmap tool. We'll be discussing it later. Okay, after 2 to 3 class we'll be discussing this one nmap. Okay, so don't worry, keep patience. We'll discuss some practical things which will be some interesting things for you. Okay, so please be there. So we'll be discussing this nmap part, okay, later. So now I'm just proceeding for the details of networking. Okay, so introduction to computer network. Okay, so first we'll discuss what is computer network. Okay, so everybody knows what is the definition of computer. This is very basic. Even one standard fourth or eighth class student can also tell what is the definition of computer. No need to discuss, right? Because it's a electronic device, which is used for the basic computing operations. Okay, where the user gives the input and device gives us the output, right, as a result. So now what is computer network? What do you mean by computer network? So you can see computer network connects two or more autonomous computer. That is a network. Okay. Now you can see these are the computers, you can see, right? Okay. Now you can see these are the computers. Okay. Okay. These are the computers, you can see. Okay. Now
these computers are connected with each other. Okay, so you can see wire kind of thing is there, right? These are the kind of wire you can see. So this part is the this is networking. So whether it is connected with one wire or a wireless kind of thing, it can be called as network, because more than two devices are connected with each other. So we can see, we can call it as a network. This is the computer, these connectors are computers are connected with each other. So I can see it has written that the computers can be geographically located anywhere, right? It can be anywhere. If it is connected, we can call it as a network. You can see, let's say uh, you are talking through a phone. Okay, you are talking to your friend is at Delhi, currently you are in Bhubaneswar, let's say. So that means if you are connected with each other, there is a network, there is a medium, through that medium your devices are connected. Okay, so that is what, that is your network. Okay, so why you have mentioned that autonomous computers? Because it has it is working automatically, not because the networks are connected, okay, with a network, so that is automated. Okay, so you see, uh, next is uh, LAN, MAN and WAN. Okay, what are these? So you see, LAN stands for your local area network. Okay, so uh, you can see we have some words in our labs. Okay, because you are also studying in colleges, you just visit your computer lab or your faculty chambers. Okay, there you can find so many LAN words will be there, right? So we are using those LAN cables to connect to our computer. So all those computers can be connected with each other in a local area. Okay, let's say you are inside a building. Okay, you are inside a building. Okay, so there is a need of LAN. Okay, or if the computers are connected with some wires, so we can call it as local area network. Network in a small geographical area, let it be a room or building or a campus, it can be called as a LAN. Okay, understood. So next is MAN. So MAN is what? Metropolitan area network. Okay, so if we are establishing a network inside a metropolitan area example, let's say some metro cities. Okay, so let's say Delhi, Kolkata, etc., etc. So in those metropolitan area, if someone is establishing a network, okay, so we can call it as a MAN. Okay, metropolitan area network. Okay, so don't worry, I'll be sharing this PPT in the description, you can download. Okay, uh, so now network speed geographically, okay, let's say in the country or across the globe, is called as WAN or wide area network. Okay, so network spread geographically in the sense some geographical regions. Okay, if the network establishes in geographical regions. Okay, let's say you are in India, someone, let's say your friend is in USA or Japan or Canada. Okay, in any place. Okay, if the network has been established in those areas, it has connected with all those regions, so that can be called as what? WAN. Okay, so let's say in this case we consider country or across globe. Okay, so see the difference. In LAN, we are considering a room, okay, or one building, right, or one office campus, whatever. Okay, office campus. But in case of your MAN,
we are considering what? Some metropolitan area, okay, right? And in case of your one, okay, we are considering what? The country, okay, one country, one let's say uh, a big the country or across the globe, okay, we are considering. So that is your what? One, okay. So it is clear, I guess. Now you see applications of network, okay. So what are the applications of network? So first application is resource sharing, okay. So in resource sharing, you see, so one is hardware sharing and one is software sharing, okay. So for this resource sharing concept, I will discuss one option, which is your virtualization. I will discuss this later. I will discuss this later. Okay. Now, for now, you just see what is resource sharing. So one is your hardware, and one is software. So for hardware sharing, you see computing resources. So what are the computing resources? The hardwares do we have? What are the hardwares? Let's say you are having CPU, okay, you are having RAM in the computer, you have ROM, memory, right? Memory, let's say, then let's say network, okay, networking devices, right? Or networking components. You see, now networking components would be appropriate. Networking components, let's say disk, printers, okay. So these are extra things. So, okay, so for computing resources, we have CPU, RAM, ROM, memory, networking components, storage components, right? So these are the storage components, everything, okay, we can consider. So now software components. So for software resource sharing, we have application software. So application software, okay. So application software is what? One is so in the software we have two things. One is system software, one is application software, okay. So in system software we are having OS, operating system, let's say Windows, Linux, whatever. And in application software, we are having what? We are having some of the things like so any application, let's say your Microsoft Office, Word, PowerPoint, okay, Paint, okay, any software, let's say Instagram, Facebook, whatever. So these are the application software. So that means it want to say that through the network we can share these hardware components, also the software components, okay. So nowadays we are using cloud. How it is possible? So cloud is only possible because of network, okay. If you have network, so you see the difference of cloud. So like so cloud definition says like we can access the resources, we can access the resources like hardware or software, okay, through the internet, okay, through the internet, and it will be virtualized, it will be virtualized through the globe, okay. That means from any point of location we can access the data, whatever we can store in the cloud. So you can see without network nothing is possible, okay. Even to hack a network, to hack anything, let's say for hacking purpose, ethical hacking, I'm not going for unethical thing. So for ethical purpose, if you are doing it, network is very much important, okay. So next is information sharing, okay. So information sharing is what? Easy accessibility from anywhere. That means let's say files or databases, okay. So that was which I was saying just few seconds ago, that information, that means you can access the data from anywhere. You can access the data from anywhere, but the main criteria is network should be there. If no network is there, you cannot access that one. And next is search capability. Let's say www
That means World Wide Web. That World Wide Web is what? Like World Wide Web is connecting all the websites. It is connected with all the websites through what? Through network. Without network, nothing is possible. Okay. Next is communication. So in communication, we are having email, electronic mail, right? Message broadcast. Okay, we can broadcast the message, right? We are using, WhatsApp. Let's say WhatsApp. So through WhatsApp, you can broadcast the thing, right? Without network, can you do these things? No. So next is remote computing. Remote computing is the cloud. Okay. So remote computing is what? Like you can use the laptop, you can use the computer, you can use some kind of things. Remote computing, right? Let me give an example. Work from home. Work from home. So what is it? Work from home. Nowadays, all the companies have given work from home. Okay. Nowadays, hybrid mode is there, but work from home, they're also doing the work from home option. Okay. So remote computing means what? You can do the computing process from a remote area. Okay, from a distant location you can do. Okay, you can perform. Okay, let's say your system is in Bhubaneswar. Okay, so you want to access your Bhubaneswar system from Delhi or from Bangalore, or let's say from any other country. That is also possible through cloud. Okay, so that is remote computing. Now distributed processing or grid computing. Distributed processing in the sense, let's say this is one server, and this server is particularly, I'm just explaining in a other area. See, what is distributed computing? You see, distributed kind of thing. You see, let's say this is a server. I will explain what is server. Okay, let's say this is a server, and uh, one task is assigned to the server. Let's say this is a task. Okay, let's say task name is Z. So task Z assigned to this server. Okay, now this server will distribute the task into multiple parts or multiple steps. Okay, now Z will be distributed, let's say, among 5. Okay, so now you see, so it will assign those tasks, distributed and assigned to different servers. So let's say this is server A, let's say this is server B, server C, okay, server D and server E. Okay, now these 5 servers will solve the problem together. Okay, let's say as you are solving some equation problem, mathematical problem, big mathematical problem, so you are solving it some step by step, right? So similarly this Z task will be divided or distributed among 5, not 5, I'm just giving an example, it can be more. Okay, and it will be distributed. So all these servers will work together as a team and give the output. So output they will provide. Okay, so this is what distributed computing, where so many servers will work, one will solve one problem as a team. Okay, so this is what distributed. And another thing which is, it is autonomous. Okay, they will do it automatically. Okay, so that is your automated computing, it is saying. Okay, so it is saying distributed processing or grid computing, which is good. Okay, so till now, if it is clear to all of you, please mention in the chat box, understood the basics. Please mention if you have understood. Please mention in the chat box, understood the basics.
Everybody? Those who are watching? Okay, those who are watching, please mention understood the basics. Waiting for your confirmation. Those who are having doubt, please mention in the chat box. Good, Priyavrata, you understood. Others, what about others? Please mention. Yes, Smita, understood. Very good. Others? Okay, so got the confirmation from all of you. Now let's proceed further. So now we'll discuss some networking topology. Okay, what is that? Network topology. So what is network topology? You see here. So the network topology defines the way in which computers, printers, and other devices are connected. Okay, so that means you can say it is a discipline or the way they are connected. Okay, let's say I'm just giving an example. Okay, you see, let's say this is called as bus topology. In the bus topology, you can see these devices are connected linearly. So this is one of the way of connecting the devices, right? And you can see these are the devices connected in a ring manner. So in the ring manner means it is ring topology. Now you can see when where the devices are connected with each other through a star like pattern. Where it is connected with star like pattern, it is called as star topology. Okay, where it is connected with some extended star. Okay, first you make a star and you make then you make some branches. Okay, so it is what extended star topology, and this is mesh topology. Okay, it's a complex matter where it's a complex manner because these are connected with each other through a complex connection. Okay, now you see a network topology describes the layout of the wire and devices as well as the paths used by the data transmission. Okay, let's see, these are the devices. These devices are connected with each other through wires, okay, or through some kind of cables. Okay, Sanjeev Yadav. Okay, you want Hindi explanation? Great. Thanks for the confirmation. So I'll be also explaining in Hindi. No issues. Okay. तो आप जैसे कि देख सकते हो कि ये जितने भी आपका ये देख रहे हो डिवाइसेस है. ओके, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये डिवाइसेस आप देख रहे हो, राइट? ये डिवाइसेस आप देख रहे हो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू सम काइंड ऑफ वायर्स. वायर के थ्रू ये लोग अपने ये आपस में कनेक्ट हुए हैं, राइट? यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि बहुत सारे डिवाइसेस है जो अपने आप में कनेक्टेड हुए हैं एक रिंग स्ट्रक्चर में. ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एक रिंग पहनते हो, जैसे कि लेट्स से ये एक रिंग है, आप देख सकते हो. तो एक रिंग का स्ट्रक्चर है, तो रिंग मतलब आपस में ऐसे ही कनेक्ट करते हैं चेन सिस्टम में, राइट? सो इसे आप बताओ, इसे आप क्या बोलोगे? रिंग टोपोलॉजी. ये डिवाइस आप अपने आप में एक रिंग फॉर्म करते हैं, राइट? और एक स्टार टोपोलॉजी आप देख सकते हो. स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि ये जो डिवाइसेस है ये एक स्टार पैटर्न फॉर्म करता है, राइट? तो ये बेसिक नेटवर्किंग थिंग्स है, और इलेक्ट्रिकल्स में भी ये सब लोग पढ़ते भी हो, राइट? क्योंकि वायर्स भी वैसे ही कनेक्शन रहता है, राइट? और ये एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी है. अब देखो कि एक्सटेंडेड टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि पहले ये एक स्टार फॉर्म करेगा और स्टार के बाद एक ब्रांच भी क्रिएट करेगा. ये एक्सटेंड हुआ है वहां से, राइट?
तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। अनदर इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या है कि ये जो डिवाइसेस है कनेक्टेड हुए हैं, ये आपस में एक मैश स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं, राइट। तो लेट्स से ये आपस में ऐसे कनेक्ट हुए हैं, ओके ओके, एक मेस स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया, राइट। सो ये इसे हम लोग बोलेंगे मेस टोपोलॉजी, ओके। तो आई गेस नेटवर्क टोपोलॉजी आपको समझ में आया, और एक एक के बाद एक हम चलेंगे, राइट। पहले हम लोग पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी क्या है। ये बस मतलब जो ट्रांसपोर्ट वाला बस नहीं है, ये वो वाला बस नहीं है। ये क्या है, ये बस बेसिकली क्या है कि जो लीनियर बस, मतलब commonly referred to as a linear bus, all the devices on a bus topology are connected by one single cable, okay। तो ये जो डिवाइसेस आप देख रहे हो, ओके, ये कनेक्ट हुआ है थ्रू बस, केबल है बस, ओके। तो ये बस के थ्रू कनेक्शन हुआ है और एक लीनियर मैनर में फॉर्म किया गया है, ओके। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या, बस टोपोलॉजी, ओके। तो सिंपल है, एग्जाम में अगर आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो। ये सेमिस्टर में भी आप लोग का नेटवर्किंग होगा। फर्स्ट ईयर लोग का तो नहीं होगा, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी होंगे तो उनका भी हो सकता है नेटवर्किंग चैप्टर, ओके। तो उनके लिए ये बहुत इजी होगा कि आप नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स पहले से ही जान लोगे, कुछ जानोगे। डिटेल में तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 2 मंथ्स का कोर्स है। तो 2 मंथ्स के कोर्स में हम लोग मॉड्यूल वाइज बहुत सारे चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ओके। तो इसमें हम लोग सारी चीज़ का बेसिक सीखेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे, राइट। तो वंस ये बेसिक्स कवर हो जाए फिर हम लोग एडवांस में चलेंगे। तो एडवांस ये कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग ये कोर्स कंप्लीट के बाद नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एडवांस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, थोड़ा उसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है, नो इश्यूज। तो let's come to the next part, which is your bus topology. We have already discussed. It is connected through a single cable, and the device should be connected through a bus. Bus means it's a kind of cable, okay? Bus connection, right? Next, star and tree topology, okay? So you see, the star topology is the most commonly used architecture in Ethernet LANs, okay. So we'll discuss what is Ethernet LANs. We'll discuss what is this switches, what is this routers, okay, what is this packets, what is traffic. We'll discuss all these things, okay. So for now, as we are discussing only the definitions, okay, क्योंकि ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। इथरनेट लैन्स हो गया, स्विचेस, राउटर्स, नेट ट्रैफिक पैकेट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये सब टर्म्स आप लोग पहले समझ लो। पहले हम लोग डेफिनेशन में चलेंगे क्योंकि डेफिनेशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिटेल में चलेंगे सारी चीज़, राइट। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है कि द स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट कॉमनली यूज आर्किटेक्चर इन इथरनेट लैन्स। तो हम लोग जो इथरनेट लैन यूज करते हैं उस ये सारे चीज़ में ये कॉमन है, कौन सा, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी ये कॉमन चीज़ है, राइट। When installed in the star topology resembles spokes in bicycle wheel, ओके। बाईसाइकिल का जो व्हील होता है, ओके, बाईसाइकिल का जो पहिया होता है, ठीक है, वो पहिए में आप देखे होंगे बहुत सारे स्पोक्स लगे होंगे बाईसाइकिल के। हाँ, साइकिल आप देखे होगे ना, साइकिल का जो होता है उसका व्हील। तो व्हील में क्या होता है कि पहिया जो होता है उसमें बहुत सारे स्पोक्स रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये वो चीज़ जैसा है दिखने में, ये स्टार टोपोलॉजी भी वैसा ही है, राइट। तो when installed the star topology resembles spokes in a bicycle wheel. Now larger networks use the extended star topology also called the tree topology. तो अभी आप देखो कि जब देखो हमारा रिक्वायरमेंट जैसा है हम लोग वैसा यूज़ करते हैं। तो लेट से अभी ये बिल्डिंग में लेट से हम लोग ये जो कैंपस बिल्डिंग है या फिर जो ऑफिस है, ये ऑफिस में लेट से
जो भी लैन का कनेक्शन है यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टार टोपोलॉजी में चल जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि अभी बहुत सारे बिल्डिंग्स है आपस में कनेक्टेड है, या फिर बहुत लंबा थोड़ा हमें चाहिए लैन। ठीक है, तो लैन कनेक्शन, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ट्री टोपोलॉजी चाहिए, क्योंकि लैन में उसका रिक्वायरमेंट फिट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक थोड़ा सा ट्री टोपोलॉजी चाहिए, और एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये ट्री की तरह फॉर्म करता है, आप देख सकते हो, राइट। तो इसे आप क्या बताओगे, सो दिस इज योर वर्ड, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी बोल सकते हो, या फिर आप ट्री टोपोलॉजी भी बोल सकते हो। ठीक है, सो larger networks use the extended star topology, also called tree topology. Okay, when used in used with network devices that filter frames or pockets. Okay, like bridges, switches, and routers. Okay, so this topology significantly reduces the traffic on the wires by sending packets to only to the wires of the destination host. Okay, so it is saying that uh, you can send the data, it can also filter the data. Okay, so but for this we need what, bridges, switches and routers. Okay, ये सब devices उसको चाहिए, switches, bridges, router. Okay, इसके थ्रू नेटवर्किंग डिवाइसेस ये जो है, इसके थ्रू हम लोग ये सारे चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या करता है कि ट्रैफिक को रिड्यूस करता है, जो कि इनकमिंग ट्रैफिक्स होते हैं, जनरेट होता है, उसको वो रिड्यूस करता है। ओके, बाय सेंडिंग पैकेट्स ओनली टू द वेयर्स ऑफ द डेस्टिनेशन होस्ट। तो डेस्टिनेशन होस्ट क्या है कि हम यहाँ से एक डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये सेंडर हो गया, तो एक डेस्टिनेशन है, और वो रिसीवर है जहाँ पे वो पहुँचेगा, जहाँ पे डेटा पैकेट्स सेंड होगा, तो वो आपका डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, पहुँचने के लिए हमें ये डिवाइसेस चाहिए। क्या चाहिए, स्विचेस हो गया, ब्रिजेस हो गया, राउटर्स हो गया, तो वो हमें राउटर के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे, राउटर क्या है, ये सब नेटवर्किंग डिवाइसेस कंपोनेंट्स भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो नेक्स्ट है आपका रिंग टोपोलॉजी। सो व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी, सो रिंग टोपोलॉजी सेज a frame travels around the ring, stopping at each node. If a node wants to transmit the data, it adds the data as well as the destination address to the frame. ओके, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि ये एक रिंग टाइप का फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो रिंग है ये बेसिकली टू टाइप्स है, एक सिंगल रिंग, डुअल रिंग। तो ये आप जो देख रहे हो ये एक सिंगल रिंग है, और ये जो आप देख रहे हो डुअल रिंग है। तो सिंगल रिंग क्या है, ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क शेयर अ सिंगल केबल। तो ये जो डिवाइसेस है ये आपस में कनेक्ट हुआ है थ्रू सिंगल केबल, एक ही केबल सबके साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पे देखो कि डुअल रिंग टोपोलॉजी अलाउज द डेटा टू बी सेंड इन बोथ डायरेक्शंस। तो दोनों डायरेक्शन में है। ठीक है, ये डायरेक्शन में भी है और ये डायरेक्शन में भी है, तो डायरेक्शन वहाँ पे दोनों डायरेक्शन में है। तो जैसे कि आप बता सकते हो, जैसे वन वे रोड होता है, वन वे रोड। ठीक है, मतलब एक ही रोड में जिसमें आप जाओगे उसी में ही आपको, मतलब एक ही रोड में वो उधर से आप जाओगे, दूसरे में आप आ सकते हो। ठीक है, तो डुअल में क्या है कि ये बोथ डायरेक्शन में है, यहाँ पे आप जा भी सकते हो, यहाँ पे आ भी सकते हो, तो बोथ डुअल रिंग में है। ठीक है, सिंगल रोड और मल्टी लेन जो रोड होता है ये उसी का एग्जाम्पल भी हो सकता है, राइट। सो अ फ्रेम ट्रेवल्स अराउंड द रिंग स्टॉपिंग एट ईच नोड। ओके, तो जैसे कि ये डेटा ट्रैवल करता है, एक नोड में रुक गया, फिर दूसरे नोड में जाएगा, वहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो ऐसे करके वो डेटा ट्रैवल करता है। ओके, सो if a node wants to transmit data, it adds the data as well as the destination address to the frame। तो यहाँ पे क्या करना रहता है कि लेट्स से ये नोड का नाम है n1, इसका नाम है n2, इसका नाम है n3, ऐसे करके है। तो हर एक नोड में लेट्स से यहाँ से यहाँ तक एड्रेस में जाएगा, तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस का एग्जैक्ट डिटेल्स वहाँ पे डालना पड़ेगा।
फिर यहाँ से अभी ये सेंडर हो गया, ये एक रिसीवर हो जाएगा N3। तो N3 डेस्टिनेशन है, तो N3 के लिए भी सारा डिटेल्स वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली N4, यहाँ पे N4 आएगा। अभी N4 डेस्टिनेशन हो गया, N3 सेंडर है, तो N3 अभी क्या करेगा, N4 का सारा डिटेल्स वहाँ पे ऐड करेगा, तो तभी N3 से डेटा N4 को ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो so this is the thing. So the frame then continues around the ring until it finds the destination node, which takes the data out of the frame. Let's say हमारा लास्ट जो है यहाँ से N1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, let's say खत्म होगा यहाँ पे। So N4, N5, N6, N7, N8, तो N8 में खत्म होगा। तो जब ये एक के बाद ट्रैवल करता गया और यहाँ पे आके खत्म होगा, तो वही उसको पता चल, क्योंकि यहाँ पे एंड हुआ है, उसको अपना डेस्टिनेशन नोड मिल गया। तो जब तक उसको अपना डेस्टिनेशन नोड नहीं मिलता, तो वो ऐसे ही वो डेटा ट्रैवल करता रहेगा। ओके, फाइनली जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे डाटा स्टॉप होगा। ठीक है, सो ये आपका रिंग टोपोलॉजी हो गया। नेक्स्ट है आपका मेश टोपोलॉजी। ओके, सो मेश टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, देखो ये जो कनेक्शन है ये एक मेश की तरह है, मतलब इट इज कनेक्टेड लाइक अ मेश मैनर। ओके, so mesh topology connects all the devices nodes to each other for redundancy and fault tolerance. तो redundancy fault tolerance क्या है कि जहाँ पे आपका नेटवर्क लेटेंसी थोड़ा कम होगा। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो ना लैग करता है, कोई भी गेम वगैरह खेलते हो बोलते हैं कि लैग कर रहा है। लैग कर रहा है मतलब क्या है कि लेट से ये सेंडर है, ये डेस्टिनेशन है, तो ये डिवाइस से ये डिवाइस कनेक्शन हो रहा है। तो ये कनेक्शन है, मतलब ये कनेक्शन जब एस्टेब्लिश होगा, ये एक रिक्वेस्ट भेजा यहाँ पे, और ये एक्सेप्ट करेगा उसका रिक्वेस्ट। ये जब एक्सेप्ट करेगा, ये बताएगा कि ये ए डिवाइस है, ये बी डिवाइस है। तो ए डिवाइस बी डिवाइस को डेटा सेंड कर रहा है, तो ये पहले एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और वो एक एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट फिर भेजेगा ए को, बी भेजेगा ए को, तो तभी जाके एस्टेब्लिश होगा। और ये विद इन सर्टन टाइम ऑफ स्पैन होना चाहिए, विद इन 1 सेकेंड, मिली सेकेंड में होना चाहिए, तो तभी आपका लेटेंसी कम आएगा। अगर लगता है लेट से 3-4 सेकेंड लगा, सब मिनट लगा, तो वहाँ पे लेटेंसी ज़्यादा होता है, तभी आप बोलते हो कि लैग करता है। जैसे कि आप अपने डिवाइस से लेट से आप गेम खेल रहे हो BGMI, ओके BGMI आप खेल रहे हो, तो वहाँ से आप अपने गेम को एक्सेस कर रहे हो। कभी कभार आप लॉगिन करते हो तो आपको डिले दिखाता है, राइट। लॉगिन करते हो पर तुरंत लॉगिन नहीं होता है, तो लैग करता है। कि गेम भी खेलते हो, बीच बीच में ही बोलता है कि लैग करते हो, वो लैग करता है क्यों? क्योंकि वो लेटेंसी जो है वो हाई है, मतलब पिंग जो है वो हाई है। हाई है मतलब क्या है कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में वो डिले हो रहा है, गैप हो रहा है। ओके, सो दैट इज द थिंग। उसको रिड्यूस करने के लिए मेश टोपोलॉजी है। ओके, एंड ऑल्सो फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस क्या है कि लेट से ए बी, जैसे ए तो हमारा डिवाइस है, बी एक डेस्टिनेशन सर्वर है। डेस्टिनेशन सर्वर अगर 3-4 ठो हो, तो लेट से मैं बी को कनेक्शन भेज रहा हूँ, बी लेट से फेल हो गया, लेट से डिवाइस वो सर्वर अभी डाउन हो गया, तो अगर बी का सर्वर सी को स्विच कर जाए, तो हमारा जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है वो बी से सी तक आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, लेट से दिस इज ए, तो अभी ए से मैं कनेक्शन भेज रहा हूँ बी को। ओके, तो लेट से बी का कनेक्शन जो है, लेट से बी सर्वर फेल हो गया, वो डाउन हो गया, तो लेट से सी और एक सर्वर है। तो अगर बी फेल हो गया, तो बी तुरंत अगर सी को स्विच हो जाए, तो हमारा कनेक्शन रीराउट हो गया बी से सी तक। ओके, अभी सी में अभी कनेक्शन हो गया, तो अभी ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। लेट से सी फेल हो गया, लेट से यहाँ पे डी एक है, तो यहाँ पे फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा डी को। ओके ओके, तो अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, किसे? डी को कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। लेट से फिर से डी फेल हो गया, अगर डी फेल हो जाए, तो अगर ई होगा तो कनेक्शन रीराउट हो जाएगा डी से ई तक, तो इसे हम लोग बोलेंगे मैश टोपोलॉजी। तो ये देखो, ये वैसे में आपस में कनेक्टेड है। सो ओके, लेट से अगर हम लोग SBI की बात करेंगे, तो कितने SBI होंगे?
SBI लेट से बहुत सारे होंगे, ओके, कितने सारे, लेट से 5-6 SBI होंगे, एग्जाम्पल बहुत होंगे, लेट से 15-20 उससे ज़्यादा होगा, लेट से भुवनेश्वर में लेट से 15-20 हैं। तो ये हमारा सर्वर है, ठीक है, लेट से हम लोग कुछ एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जितने भी बैंक है, तो बैंक में जितने कंप्यूटर्स है वो अपने आपस में कनेक्टेड हैं, और वहाँ से दूसरे जितने SBIs हैं वो भी अपने आपस में कनेक्टेड हैं। तो वो किसके थ्रू कनेक्ट होंगे? WAN के थ्रू कनेक्ट होंगे, क्योंकि वो बिग एरिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या? मेश टोपोलॉजी। ये बेसिकली मेश टोपोलॉजी यूज़ होता है, बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ पे यूज़ होता है, ओके। सो नाउ इम्प्लीमेंटिंग द मेश टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। अभी ये क्या हो गया कि ये भी क्या हो गया कि एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? ओके, समवन इज सेइंग, sir, your opinion on ongoing protest of CJP. Uh, okay, so that's a political question I'm getting, but I'm not supposed to give the answer for such kind of things. But yes, which is honest, I would like to give that answer because I love my country. Okay, so I need improvement. Improvement should be there in our country. Okay, I'm not I'm not supporting CJP, but they are actually doing the good thing. Okay, so many uh, army officers, ex-army officers, some ex-Supreme Court judges have also joined their protest. Okay, also our ex-CM of Delhi, Arvind Kejriwal also joined. Okay, many actors are also supporting them. So I'm also supporting to their protest, not to CJP. So currently Sonam Wangchuk is also supporting CJP. He is there since 19 days. It's a huge thing, but our government is not supporting. So so it's my request to support him in this situation. So yeah, I support the protest. Okay, thank you for your question. Okay, let's come to our point. So it is used to once to interconnect LANs and for mission critical networks. Okay, implementing the mesh topology is expensive and difficult. Okay, so this is all about your टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, ये इतना ही हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो नेटवर्क कंपोनेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे नेटवर्किंग केबल्स, जिसमें बहुत सारे क्या क्या रहता है, इसमें बहुत सारे फाइबर केबल भी रहता है। ओके, बहुत सारे जैकेट रहता है, वो हम लोग सारे पढ़ेंगे, राइट। हब रहता है, स्विचेस, राउटर्स, मॉडेम्स, सब पढ़ेंगे। then client server connection, TCP IP connection will cover. Okay, so for now, thanks for joining our live session. So if anybody is there which is new to our channel, who are new to our channel, so you are welcome. And if you want to join our WhatsApp group, you can message me. I will share, you can message in the chat box. I will share the link of the group. You can join there. Okay, and this is a 2 months course we'll discuss. And if you are new, so I would like to say you that please subscribe our channel. जो लोग नए हैं वो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। विल मीट टुमारो, and all the details, joining time, I will be sharing in the WhatsApp group. Thank you for joining today. Have a great day. Bye bye.